हेलो एवरीवन एबे हमें देखिबा एरर इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एटा क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पकई दिए टाइप ऑफ एरर रे। तो एटा हमें देखिनबा एरर इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो गोटे रिसर्चर कौन कर टेस्ट कर हाइपोथेसिस की सेतबेले से कौन ना स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स केते गुडे यूज कर बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस द रिसर्चर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो से अकॉर्डिंग से कौन कर नल हाइपोथेसिस टा एक्सेप्ट हबो कि रिजेक्ट हबो डिसाइड कर। तो बेले बेले कौन हुए इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू and is accepted or when it is false and is rejected the decision taken are true। तो एटा कौन पाई हुए किछिटा एरर पाई हुए। एठी हमें देखिबा if the null hypothesis is true and is accepted or when it is false and is rejected the decision taken are true। एटा को हमें आहुरी सिंप्लीफाई करके बुझिबा कौन ना रिसर्चर डिसाइड करछि बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। जेतेबेले फॉल्स सेतेबेले कौन होची फॉल्स जेतेबेले सेतेबेले कौन हैला रिजेक्ट कला। तो एठी डिसीजन ठीक हैला जेतेबेले कौन हैला एठी ट्रू जेतेबेले हैला सेतेबेले नॉट टू रिजेक्ट रिजेक्ट कलानी। तो एठी कौन है गला जहाँ भी मेथड रू ताकू मिलूची फाइंडिंग से जहाँ भी पाउची मेथड ए इज नॉट इक्वल टू मेथड बी बुझेला। तो सेति फॉल्स है एटा रिजेक्ट हो गला किंतु एठी कौन हो गला मेथड ए इज इक्वल्स टू मेथड बी। तो ये कौन है ट्रू है तो से एटा कौन है करेक्ट डिसीजन नॉट टू रिजेक्ट और एटा को से एक्सेप्ट कला किंतु एटा एरर आसुची केतेबेले जेतेबेले एटा कौन अछि टू द रिसर्चर डिसाइड बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। ता माने कौन जेतेबेले यार अपोजिटा होची कौन होची ना ट्रू थिला बेले कौन हे गला रिजेक्ट हे गला। ता माने जेतेबेले ए इक्वल्स टू बी अछि एटा रिजेक्ट हे गला तो एटा हे गला एरर आसी गला तो एटा फॉल्स डिसीजन हे गला किंतु मेथड रू जना पड़ची कौन ना ट्रू नुहे रिजेक्ट बोली से रिजेक्ट कर देला किंतु एक्चुअली कौन अछि एठी हाइपोथेसिस टा ट्रू अछि एठी सेमती फॉल्स अछि किंतु एठी कौन हे गला नॉट टू रिजेक्ट।
बुझला ए इज नॉट इक्वल टू बी यही साइन अनुसार मन रखिले इजी हम जितेबाला ए इज नॉट इक्वल टू बी होची सेतेबाला कौन हवा कथा रिजेक्ट हवा कथा किंतु एठी हला नॉट टू रिजेक्ट तो एठी एरर पळे आसिला एठी जितेबाला ए इक्वल्स टू बी हला एठी एक्सेप्ट बा नॉट टू रिजेक्ट हवा कथा रिजेक्ट पळे आसिला तो एठी आसीगला हमर एरर एबे आमे देखिबा तो एठी टू टाइप्स रो एरर हमको देखा जिवो फर्स्ट हला if the null hypothesis is true but rejected तो एठी गोटे टाइप रो आछी देन if the null hypothesis is false but accepted or not to rejected but accepted तो एठी गोटे हला टाइप 1 एरर आ गोटे आसी जिवो टाइप 2 एरर तो एटा ही गला टाइप 1 एरर टाइप 1 एटा ही गला टाइप 2 एरर बुझला जेतेबेले नॉल हाइपोथेसिस टा कौन अच्छी ट्रू अच्छी बट इज रिजेक्टेड आमे रिजेक्ट कर देची रिसर्चर कौन करची रिजेक्ट कर देची ता मेथड बा ता डाटा से इंटरप्रेट करके कौन करची रिजेक्ट कर देची तो सेटा को टाइप 1 एरर बोली कह जिवो जेतेबेले नॉल हाइपोथेसिस टा फॉल्स अच्छी बट द रिसर्चर ताको कौन करची एक्सेप्ट कर देची सेतेबेले सेटा हे जिवो टाइप 2 एरर तो टाइप 1 टाइप 2 एरर बुझेला तो टाइप 1 एरर को अदर नेम रे कहा जाए टाइप 1 एरर अदर नेम हैला अल्फा एरर एटा मन रखियो पड़िबो टाइप 1 एरर एटा मैक्सिमम क्वेश्चन पकईते जेतेबेले नॉल हाइपोथेसिस ट्रू बट इज रिजेक्टेड सेतेबेले टाइप 1 एरर और अल्फा एरर जेतेबेले नॉल हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट एक्सेप्टेड सेतेबेले हेई जिवो एटा बीटा एरर और टाइप 2 एरर और बीटा एरर बुझला टाइप 1 एरर एटा हे गला टाइप 2 एरर अल्फा एरर और बीटा एरर तो एटा थिला एरर्स इन टेस्टिंग द हाइपोथेसिस तो ये टू टाइप्स रो एरर आमे देखिले द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग टाइप 1 एरर इज अल्फा एरर एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग टाइप 2 एरर इज कॉल्ड बीटा एरर तो एट ए टाइम दीटा एरर को मिनिमाइज करी हबनी जेहेतु आमर सैंपल साइज कौन होची फिक्स्ड रहउची जेतेबेले आमे कौन करिबा टाइप 1 एरर को कमेबा को ट्राई करबा बा मिनिमाइज करबा को ट्राई करबा सेतेबेले टाइप 2 एरर कौन हबो मैक्सिमाइज हे जो जेतेबेले टाइप 2 एरर मैक्सिमाइज मिनिमाइज करबा को ट्राई करबा टाइप 1 एरर मैक्सिमाइज हे जो तो ऑपोजिट एटा रहइबो तो सेथि पई टाइप 1 एरर को मैक्सिमम टाइम कंट्रोल करबा को बा मिनिमाइज करबा को ट्राई करंती रिसर्चर जेहेतु एटा कौन करे रिलेशनशिप टा को एग्जिस्ट करोची कि नहीं सेटा डिसाइड करबो तो एति केला जिंस बेसिकली हमर क्वेश्चंस आसीबो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर रो डेफिनेशन ऊपर जोठी कि नॉल हाइपोथेसिस ट्रू बट रिजेक्टेड नॉल हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट नॉट टू रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड एटा हे गला टाइप 1 टाइप 2 एरर एबे हमें देखिबा सिग्निफिकेंट डिफरेंट और डिफरेंस बिटवीन मीन्स रिसर्चर मेजर इंटरेस्ट कौन थे कौन ऑब्जर्व कर वेदर द ऑब्जर्व डिफरेंसेस इज ट्रू
difference or due to a chance factor or sampling variation. Researcher एटा सब बेले जानिबा को ट्राई करे whether the observed difference is true difference or due to a chance factor or sampling variation. For example, आमे नबा suppose in an experiment two groups are exposed to different treatments. दीटा ग्रुप रहिले different treatment को आमे तंको expose कले. And researcher found that one mean is greater than other. जेतेबेले पाइगला सेम ट्रीटमेंट दिया जाउची किंतु one mean is different than different treatment दिया जाउची तो एठी देखिला one mean is different than other. तो एठी क्वेश्चन कोन आसीबो whether the difference is due to chance, if not then certainly due to the effect of treatment. chance पई होची जदि नुहे ताहले ट्रीटमेंट पई होची जेहेतु दीटा different treatment को दिया गला. So that we need a statistical technique to test the significant difference between means. तो एठी हमर कोन दरकार statistical technique दरकार जोठी कि हमें टेस्ट कर परिबा एक्चुअली एटा चांस फैक्टर पई होची ना ट्रीटमेंट पई होची जो डिफरेंस ता देखा जाउची. तो एठी हमें कोन यूज कर परिबा टी टेस्ट यूज कर परिबा नले क्रिटिकल रेशियो यूज कर परिबा. तो एठी गोटे जिंस अछि प्रोसीजर टू कंप्यूट टी वैल्यू टा को केमिति हमें कैलकुलेट करबा. फर्स्ट सेट अप द नल हाइपोथेसिस फर्स्ट सेट अप करिवो. देन डिसाइड whether one-tailed or two-tailed test to be used. one-tailed 1T or 2T test how use होबो सेटा डिसाइड करबो. डिसाइड whether the sample is larger means n more than 30. sample size larger हमें केतेबेले कैलकुलेट करचंती जेतेबेले more than 30 रो अधिक आबो सेतेबेले larger sample बोली हम ताको कंसीडर करंती. and smaller and whether the means are correlated or independent. एटा देखिबा. then find out standard deviation or alpha d using appropriate formula. तो या पई डिफरेंट फार्मूला सब अछि. लार्जर पॉपुलेशन पई डिफरेंट, स्मॉलर पॉपुलेशन पई डिफरेंट फार्मूलास. देन 5 रे देखिबा कंप्यूट द क्रिटिकल रेशियो r और t वैल्यू जोटा कि फॉर्मूला एठी लिखा है जी t इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय acd. तो एटा ही गला स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस acd स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस. फर्स्ट हमें t टा को देखिबा देन हमें फॉर्मूला यूज करबा. फाइंड आउट df as appropriate. इंडिपेंडेंट सैंपल पाई का frequency distribution. then n1 plus n2 minus 2 for correlated samples n minus 1. find out the significance of t at 0.05 and 0.01. label with df. look up t values with df from table रो देखिया को पड़िबो ए वैल्यू टा केते होचे. एटा कैलकुलेशन करले ही हमें जान परबो. हमें मैथ करले ही हम जान परबो. मेक डिसीजन ऑन null hypothesis. if the t value is larger than the table value at particular significance level, that is 0.05 or 0.01, reject the null hypothesis and accept the alternate hypothesis. if the t value is less than the table value at particular significance level, accept null hypothesis and reject alternate hypothesis. then say according result interpret करबा. if
null hypothesis is rejected, it indicates that there is a significant difference between the two means. एटा मन रखिया पड़िबो ए लाइन टा. If the null hypothesis is rejected, it indicates that there is a significant difference between two means. If null hypothesis is accepted, it indicates that there is no significant difference. Null hypothesis टा accept होबो, no significant difference. Null hypothesis reject हेले there is a significant difference. It indicates that there is a significant difference between the two means. Whether the difference it has its due to chance or sampling error. ये सब गुड़ा का जना पड़े. तो एटा थिला significance difference between means. एबे देखिबा the analysis of variance or ANOVA F test हमर अछि one way. तो ये जो variance वर्ड एटा यूज होइथिला फर्स्ट बाय सर रोनाल्ड फिशर. से यूज करथिले variance वर्ड एंड से डेवलप करथिले गोटे डिटेल्ड थ्योरी जोटा कि ANOVA सहित रिलेटेड. द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ANOVA, who is also known as father of modern applied statistics, Sir Ronald Fisher और R.A. Fisher. तो एबे बुझिबा ANOVA कौन. ANOVA is essentially a procedure for testing the difference among different group of data for homogeneity, or it is a technique of investigating how much of the variability in a set of observation can be described to different causes. तो होमोजेनिटी पाई से कौन करचंदी टेस्ट करले डिफरेंस among different groups of data. तो से जो प्रोसीजर टा को हमें कहले ANOVA but the analysis of variance. Difference test कोची, variance test कोची. The test helps to compare two means of two sample drawn randomly, but at different time we have more than two samples. तो सेठी कौन होची तो basically through ANOVA one can investigate any number of factors which are hypothesized or said to influence the dependent variable. एटा हला main जोटा कि significance difference जना पड़ची by a single test. It is also called as F test. तो आम ये देखा वन वे ANOVA जोटा कि आमर सिलेबस अच्छी. तो ये यूज होची कौन, इट इज यूज टू टेस्ट फॉर डिफरेंसेस अमंग टू और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स. और one way ANOVA tests the null hypothesis that all samples have been drawn from the same parent population. Same parent population रो सबु sample जिबे. The F ratio is determined by using the following formula. F equals to variance between groups by variance within groups. Symbolically लिखिले ए टाइप रो हमें लिखिबा, किंतु एटा को ए टाइप रो पढिबा. For example हमें देखिबा, a researcher wants to compare students attitudes towards the schools on the basis of school type. तो एठी कौन हैला, एठी हमरो गोटे रहिला
डिपेंडेंट वेरिएबल जोटा कि डिपेंडेंट वेरिएबल attitude towards the schools. and group रहिले 3 groups रहिले 3 groups केमती ना ये जो schools रहिले on the basis of school type means board type 3 टा SSC CBSE आ गोटे हला ICSE तो एठी हमें कौन कर परिबा एठी वन वे ANOVA is used to test for differences in students attitudes towards the school among 3 groups तो एठी डिपेंडेंट वेरिएबल रहिला 1 किंतु ग्रुप रहिले 3 तो एठी कौन हला हमरो यूज हे परिला वन वे ANOVA तो एटा को रिपीटेड मेजर्स रे भी यूज करि हबो जतबेले कौन हेबा व्हेन सब्जेक्ट्स आर सब्जेक्टेड टू रिपीटेड मेजर्स it means the same subjects are used for each treatment तो एटा ओवरऑल इफेक्ट को देखिबो ओवरऑल इफेक्ट तो एटा बेले बेले कौन हुए मैक्सिमम टाइम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रे भी यूज है जोठी कि 3 और मोर ग्रुप्स थिबे एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल थिबो प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट हिसाब रे यूज करिके हमको एटा कैरी आउट करि हबो।